Today, at about 13:45 hours, a mudslide and an avalanche struck village Tharali, which is around 4 kilometers north of Harsil, along the Gangotri axis. Indian Army column, being the closest in Harsil camp, was the first to respond and reach the location within 10 minutes of the incident. Rescue operations are underway. Until now, around 20 people have been rescued, of which those who are injured are receiving treatment in the battalion MI room. Unfortunately, sometime after that, the mudslide and cloudburst also struck the Indian Army camp and portion of our rescue columns. Despite the same, the Indian Army is resolute in its endeavor to carry out rescue operations and assist the local populace. This is the location of the mudslide at the Dharali village. Around 13:45, a major mudslide had come in the Kheergad Nala in this particular village. The complete mid portion of the village has got swept out and the road has got blocked. The villagers on both sides have been evacuated by the army column, which reached on the ground. Presently, the villagers have been asked to stay away from this side as the mudslide is still continuing. One casualty has already been evacuated to the MI room of Harshil, and rest of the efforts to locate the persons who have got swept away is ongoing. खीरगाड़ और धराली में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद 14 राजस्थान राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण बचाव और राहत कार्यों में 150 कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे हैं। संपर्क टूट जाने, यूनिट बेस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने और 11 कर्मियों के लापता होने की आशंका के बावजूद टीम अटूट दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। अब तक 20 लोगों को बचाया जा चुका है। मूसलाधार बारिश और टूटे हुए संपर्क मार्गों ने भी हर नागरिक की सुरक्षा के उनके संकल्प को कम नहीं किया है। विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस भारतीय सेना की सच्ची भावना को दर्शाता है, जो दृढ़, निस्वार्थ और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर है। इस बीच बचाव कार्यों के लिए अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जा रही हैं।